फूड isn't just sustenance. हम सिर्फ पेट भरने या फिर जिंदा रहने के लिए खाना नहीं खाते. Some food we eat because वो दिखने में बहुत बढ़िया लगता है. कुछ डिशेस हम खाते हैं क्योंकि उनका टेस्ट हम कभी भुला नहीं पाते. But sometimes, just sometimes we eat something that makes a statement, that forces us to think, and that is when food becomes art. But only the best restaurants can do this, which is why today we are at the best restaurant in India, Indian Accent. So right now we are going inside Indian Accent and you will find out why this place is the best restaurant in the country. जब मैंने कहा कि इंडियन एक्सेंट इज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द कंट्री, मैं मजाक नहीं कर रहा था. इट्स द टॉप रेटेड इंडियन रेस्टोरेंट in Asia's 50 best restaurant list. It's the only Indian restaurant in world's 50 best restaurant list. And like any good Indian, it has cousins both in New York and London. Two critically acclaimed Indian accents in both of these cities. It is great. But full disclosure, actually मैं इस जगह को afford नहीं कर पाता अगर मेरे पास ये नौकरी ना होती तो. But enough chit chat, let's go and meet the heart and soul of this place. Celebrity chef Manish Mehrotra. Walk through the fire, the sound of a lion. I found my way back in the end. Baby, I've fallen for you and the way you make me feel. Don't need to pretend. So right now I'm here with celebrity chef, the heart and soul of Indian accent. Just the chef, I would say. Just the chef. What are we making today? So, this is our gongura fish. A nice Indian sorrel chutney, you can say gongura chutney. So, it is very similar to sorrel. So, this we have just introduced here also. And gongura prawns with sabudana vada we have introduced in New York and London. And people don't know what gongura is. Yeah. We also have sorrel leaves in India. Exactly. They don't only have They don't sorrel know. there. You can smell it like here. Okay? So just toss in this. I'll take a little bit of butter. Okay. Nice crunch and really sweet. Can we stay for a while until the fire's burned out? It's a shimmering night, setting us right. So right now we're going to have a fantastic conversation with Chef Manish about what drives Indian accent and उसके दिमाग में क्या चलता है. And obviously going to try this fantastic dish. So let's go. Indian accent is really famous, but what was your journey like? People who come here to eat, they are the real reason. 50% reason is my guests and 50% reason is my team, my restaurant team and my kitchen team. They are the ones who really help me to execute my ideas on a daily basis for my guests. Indian accent, when it started off, it was like a standalone restaurant that was competing with it was a little bit like Ranbir Kapoor and Ranveer Singh. Ranveer Singh is this boy who's come from Delhi. Ranbir Kapoor comes from this illustrious family, you know. When we were starting this restaurant 9 years back, 9.5 years back, लोगों ने सच में बोला था कि like you are mad. You are opening an Indian restaurant in Delhi, in Delhi, without butter chicken. What's wrong with you? Butter chicken नहीं है कैसे? Do whatever you want to do. That's fine. But butter chicken. Last page पे ना keep one paragraph of traditional Indian. Butter chicken, nihari, you know. कभी नहीं. बोले कि अच्छा अभी नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं. जब साल भर में नहीं चलेगा ना, लोग नहीं आएंगे ना, तब अपने आप डाल दोगे. सारे रेस्टोरेंट्स के साथ ऐसा होता है. Let's see.
And here you are. India, I'll tell you one thing. इंडिया में सबसे ज़्यादा इनोवेशन घर की हाउसवाइफ्स करती हैं. You won't believe. हमारा जो खाना है बहुत ट्रेडिशनल है और हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि वी सो स्टीप्ड इन ट्रेडिशन कि समटाइम्स वी डोंट वांट चेंज. हमें चेंज पसंद नहीं अपने खाने में. That is why I say I keep all the dishes rooted to our traditional food because there is nothing modern without tradition. बिल्कुल. I always say there cannot be a grandson without a grandfather. Every combination there has to be a reason behind it. Why you did like that. Exactly. If that is not there, तो भाई तुमने पिज्जा के ऊपर में सांभर क्यों लगाया? बिल्कुल. Whether it makes sense or not. If you can reason it, हाँ जी. then dish is successful. If you cannot reason it, Oh, you got me falling. Did you know that? Without you, I fade away. Yes. The smell of coconut just comes into you. This is beautiful. Thank you very much. So finally खाना आ गया है. गोंगुर फिश. तो गोंगुर इज सोरेल लीव्स जिससे जो साउथ इंडियन में बहुत इस्तेमाल होते हैं, शेफ़ ने बताया. और उसके साथ में कोकोनट का क्रीमी टेक्सचर. सो आई कांट रियली वेट. मैं तीर से स्मेल कर रहा हूँ. मैं खाने को जाऊँगा तो बहुत ही मज़ा आएगा. वेरी नाइस. वेरी नाइस. ओह गॉड. इतने लेयर्स हैं खाने के फ्लेवर में. कोकोनट का क्रीमीनेस है, गोंगुर का एकदम किक आता है जो वो बहुत ही बढ़िया है. बहुत बढ़िया है. मतलब ढंग से खाने भी नहीं देंगे. सस्ता प्रोडक्शन, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है. बस शशांक वेट, शशांक ईट, शशांक वेट, शशांक ईट. सो दिस इज़ द स्वीट पीस. यार कोकोनट का जो कोई भी कोकोनट बेस्ड करी होता है मुझे बहुत पसंद है. और उसके साथ गोंगुर है जो मेरी यादें जुड़ी हुई हैं इसके साथ. तो प्रभाव खक्कर जी और शौकत जी ने बोला था कि 5 स्टार होटल भी ज़रा, 5 स्टार रेस्टोरेंट भी ज़रा ट्राई कर लीजिएगा. सो हियर वी आर. इट डजंट गेट फैंसियर देन दिस. बहुत ही ज़्यादा जंप किया है हमने. पहले हमने ढाबा पे खाना खाया. अब सडनली वी आर एट प्रॉब्ली द बेस्ट रेस्टोरेंट, प्रॉब्ली द फैंसीएस्ट रेस्टोरेंट दिल्ली. आपको कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, ढाबे में या फिर ऐसे होटल में? कमेंट में लिख के बताइएगा. खाना तो खा लिया है और टाइम है रेटिंग का. देयर इज़ नो वे. जितनी मेहनत लगती है इस खाने में और जितना दिमाग लगता है और जितना पैशन लगता है और जितना दिल लगता है, जितना टेस्ट है खाने में, जितना फ्लेवर है कि आप इसको 5 स्टार से कम. मैं अगर चाहता, अगर 5 स्टार से ज़्यादा 6 स्टार भी होते तो मैं उसे 6 स्टार देने की कोशिश करता. देयर इज़ अ रीज़न वाई दिस इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द कंट्री एंड इट हैज़ प्रूव्ड. एनीवे फ्रेंड्स, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ये वीडियो. हम आपके पास आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स लेकर आएंगे और कोशिश करते रहेंगे कि हमेशा लेकर आएँ. टिल देन, आई एम शशांक एंड यू हैव बीन सर्व्ड.